So we were doing this topic called time value of money, and in that we had done chapter two earlier, and now we moved to chapter. We were now doing chapter one, where we had done most of topics. We yesterday discussed TWR and MWRR and the benefits of TWRR over MWRR. I won't say the benefits, the advantage of TWRR over MWRR. In today's class, we shall move forward and we shall discuss continuous compounding and leverage return, and then we shall be done with the topic of time value of money, and then we will start the next chapter, which is with respect to statistical measures of returns, which is chapter 3. So this is the plan of action for today. Okay, so now let's first get back to the main topic. So now we are doing LOSD. Okay, I have a very simple question to start the topic, which is, let's say I have 100 rupees which I invest today. This is my investment. Okay. My return is, let's say, 10%, let's say 12% per annum. Okay. And my time period of investment is 5 years. Now my simple question to you is that if it is compounding annually, what is the amount that I'm going to get after 5 years? What is the amount that I'm going to get after 5 years? I have invested 100 rupees. Return which I'm making is 12% per annum, annual compounding. What is the amount that I'm getting after 5 years? Can you please calculate? Tell me. Shouldn't take more than 10 seconds now. What's the answer? Guys, this is the simplest of all questions. If this is something that you're stuck at, which means that you are not thorough with the concepts. विवेक क्या आंसर होगा? Sir, 115.84. 100 PV, enter. 5 and enter. 12 IY, enter. 0 PMT, enter. CPT FP. 176.2342. ठीक है? Just check your answer, Vivek. Basic question गलत कर रहा है तू. भैया पढ़ने लग जा. तेरा पेपर कब है? नवंबर में है. बेसिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तुझसे. The continuous compounding law. Sir, I had a question. क्या? BA कैलकुलेटर के अंदर से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं या सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन कर सकते हैं? यार सिंपल इंटरेस्ट के लिए वैसे तो देखो जो सेटअप बना हुआ है, जो थर्ड रो है, दैट इज ओनली फॉर कंटेस्ट, दैट इज ओनली फॉर कंपाउंडिंग. ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या है? P into R into T by 100. यही फॉलो करना है, which is like basic calculation which you can do in any calculator or even in this calculator also. But if you're talking about the third row itself, and that is primarily fixed for um, you know compounding only. ठीक है. So the amount that you're getting after 5 years is 176 point something. कितना आ रहा है हमारा? 176.23. ठीक है. सिमरन समझ में आया ये? Yes, sir. Sure. Now, if in this question I changed a simple basic thing, let's say that instead of compounding on an annual basis, if the compounding was happening quarterly, then please tell me the answer.
if the compounding was happening quarterly, then what would be the answer? If the compounding was happening quarterly, what would be the answer? Over 9.11. 9.11. 186. Okay, 186 point. Sorry, 180.61111. 11. Simran and Ayush, what would be your answer? 2687. 2687? 100 रुपए है भाई, वो 1000 रुपए नहीं है। देखो, अब देखो सिंपल समझो, कंपाउंडिंग कैसी हो रही है? क्वार्टरली। 12% एनुअल है, तो हर क्वार्टर कितना हो गया? 3%. 12% एनुअल है तो डिवाइड बाय 4 तो 3, तो आई बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 आई बाय एंटर। ठीक है, और हर क्वार्टर कंपाउंडिंग हो रही है, 5 साल है, तो कितनी बार टोटल, कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? 20. एग्जैक्टली 20। 20 एन एंटर। जस्ट पीवी सेट है ही, पीएमडी सेट है ही, सीपीटी एफवी 180.61 is the right answer. You just have to do the basics to get the answer right. और कुछ करना ही नहीं है। If I change it to monthly, then what would be the answer? Please tell me. अगर इसको मैं मंथली कर देता हूँ कंपाउंडिंग को, तो आंसर क्या होगा? One 181.66. 181.6697. 181.67. 181.67. Simply you have to change again these two values only. 1 I by y 60 n CPT FV 181.6697. So as I'm increasing the number of compounding periods because of quarterly compounding or monthly compounding, the amount is also increasing. जब हमारा एनुअल कंपाउंडिंग था तब हमारा क्या आंसर आया था? 176 पॉइंट कुछ आ रहा था। फिर जब क्वार्टरली कंपाउंडिंग हुआ तो 180 पॉइंट कुछ आया, और जब मंथली कंपाउंडिंग हुआ तो 181.67 आया। तो जैसे नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स बढ़े, द एफवी आल्सो चेंज। नाउ आई विल मेक वन मोर चेंज। व्हाट इफ द कंपाउंडिंग इज हैपनिंग डेली? नाउ टेल मी द आंसर। डेली केस में कैसे करोगे? हाउ विल यू सॉल्व इन द केस ऑफ डेली कंपाउंडिंग? One 182.19. 19. Rest of you also please solve it. In the case of daily compounding, बाय बाय करते हैं। वो आपको निकालना पड़ेगा। अभी तो 12% ही है, 12% का डेली कंपाउंडिंग कर दिया मैंने। सर वो 19 ही 19 है। अरे जो भी है,
सिंपल है इसमें भाई, डेली कंपाउंडिंग हो रही है तो क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 365, ये हो गया मेरा आई बाय, ठीक है। और अब एक साल में 365 बार कंपाउंडिंग हो रही है ना, क्यों डेली कंपाउंडिंग है। और 5 साल है टोटल, तो 365 इंटू 5, ये मेरा एन हो गया। सीपीटी एफवी 182.1939 इज द, ठीक है। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? Yes, sir. परफेक्ट। चलो, हमने ऑलमोस्ट हर टाइप की कंपाउंडिंग देख ली। नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, ठीक है। अब कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले वो समझो। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का मतलब होता है दैट यू डिवाइड द टाइम पीरियड इन द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम पॉसिबल, मतलब जितना छोटा भाग कर सकते हो ना समय का, उतना छोटा भाग कर दो, ठीक है। एंड देन यू अराइव एट अ सिस्टम वेयर द कंपाउंडिंग इज हैपनिंग कंटिन्यूअसली, मतलब हर सेकंड कंपाउंडिंग हो रही है। हर सेकंड अगर पैसा कंपाउंड हो रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी दैट यू गेटिंग इज नोन एज कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। हमने पहले एनुअल कंपाउंडिंग करी, फिर क्वार्टरली करी, फिर मंथली करी, फिर इनफैक्ट डेली भी करी। अब मैं कह रहा हूँ नाउ वी आर इन अ सिचुएशन वेयर द कंपाउंडिंग इज हैपनिंग एवरी सेकंड। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द आंसर इन सच अ सिनेरियो, या कैसे कंपाउंडिंग करोगे उस केस में, वो समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, हम जब नॉर्मल कंपाउंडिंग लिखते हैं हम किस लिखते हैं, p इंटू 1 + r रेज टू पावर t इक्वल्स टू एफ वी, ठीक है। ऐसे लिखते हैं हम, pv इंटू 1 + r रेज टू पावर t इक्वल्स टू एफ वी। जब हम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है pv e रेज टू पावर r t इक्वल्स टू एफ वी। वहां पे 1 + r रेज टू पावर t इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर r t। This is the formula. This one is the formula that we shall use in the case of continuous. यहाँ पे continuous compounding केस में हम ये formula use करेंगे, PV into e raised to power r t equals to FV, ठीक है। और ये r और t multiplication में आपस में, where r equals to the interest rate and t equals to the time period, ठीक है। प्लीज ये फॉर्मूला नोट कर लो एक बार, ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला फॉर्मूला प्लीज फटाफट लिख लो एंड देन वी शैल मूव टू द क्वेश्चन। Done? Everyone done? Yes, sir. ठीक है। Now let's say someone invested 1,000 rupees today. The interest rate that is going to earn is, बीच में हमारा रसगुल्ला चला गया ना। the interest rate that is going to earn is 12% compounding continuously. Please keep yourself on mute. The interest rate that we are going to earn is 12% compounded continuously. N is equals to 5. Now you are asked to calculate what is the money value or what is the money that you're going to get after 5 years. ठीक है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, जो अभी तक हम करते आ रहे थे। हमें we have to use this formula. So PV shall be 1,000, then E R is 12%, so
2 into 5, which is how much? 1000 into e raised to power 0.6. That is the answer which I'm getting with respect to contents compounding. But the answer doesn't stop over there. I want the answer for e raised to power 0.5. Oh, sorry, 0.6 or 0.5? 0.6. E raised to power 0.6. मुझे इस चीज को solve करना है. I want the answer for this also. E raised to power 0.6. Now how do I do that? I go into the calculator and do you see over here? E raised to power x. Yeah, ln के ऊपर e raised to power x. Everyone I hope is able to see, Yes, sir. right? So e raised to power 0.6 है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 0.6 second ln. E raised to power 0.6 के लिए कैसे करा? 0.6 second ln. This is value of e raised to power 0.6. Now if I multiply it by 1000, 1822.11 is the money value which I'm getting after 5 years if 12% is being compounded continuously. Able to make sense? Simran, Ariman, Vivek, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है? Please एक बार खुद से solve करो in the calculator because ये एक ऐसा part होता है जिसमें बच्चे calculator पे एक बार थोड़ा सा stuck होते हैं. For solving e raised to 0.6, press 0.6, then second, then ln. This is important. ठीक है? Again, everyone. Yes, sir. If you are done with this, then solve one small question for me. I have invested in a fund, 1 lakh rupees. The fund is gonna give me 15% per annum compounded continuously for let's say 6.5 years. What is the amount that I'm going to get after 6.5 years? Please calculate. What is the amount that I'm getting after 6.5 years? 2,65,116.7. 116.7. ठीक है. That is one answer which I've got. Rest of you please solve it. Guys, if you're planning for May 2025 for CFA, the scholarship window is about to close by 26th. ठीक है? तो अपनी एप्लीकेशन फिल कर दो और एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही तो प्लीज गेट इन टच विद मी इमीडिएटली. So 2,65,000 Sir, I had a question regarding a CFA Yes. program. Yes, For yes. those of us who are in like GCC and are going for CFA program, we would not be eligible for May 2025, right? And I'm sorry for the background. नो यार, तू तो यार अभी फर्स्ट ईयर में आया है ना, तो मई 2025 में तेरा फर्स्ट ईयर मेरा तो अगस्त में होगा. अगस्त में कंप्लीट होगा, राइट? हाँ, तो यू शैल, तुझे तो लेट देना है, मतलब बेसिकली इफ योर सिलेबस इज डन टाइम एंड यू नो मे बी बिफोर द अदर स्टूडेंट्स, so then you can apply for August. So you don't need to worry right now. It's for other students. Okay. ठीक है?
Okay, Simran has also got the answer. बाकियों का भाई आया नहीं आया? आयुष, %15 continuous compounding. So कैसे सॉल्व करना है? 1 lakh e raised to power 0.15 r into t. T is 6.5. 6.5. This is 1 lakh e raised to power 0.15 into 6.5. 0.9750. So you are 0.9750. अब मुझे चाहिए e रेशियो 0.9750, तो क्या करूंगा? 0.9750 सेकेंड ln, ठीक है, into 1 lakh. 1 lakh मेरा वो था इन्वेस्टमेंट वैल्यू, तो 2,65,116.7 is my answer. This is the amount which I'm getting after 5 years. ठीक है, तो इस तरीके से मैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग. Just like I am asked to calculate the future value, I might be asked to calculate the present value as well. मुझसे present value निकालने को भी बोला जा सकता है. तो उस केस में कैसे सॉल्व करेगा क्वेश्चन वो समझता है. उस केस में कैसे सॉल्व करे वो समझता है. Let's say a fund is giving you 2 lakh rupees after investing for 5 years. And the compounding is happening at 15% continuous compounding. So what amount should I invest today to get this much amount? What amount should I invest today to get 2 lakh rupees after 5 years when compounding is happening at 15% continuously? Let's understand that. So in that case, PV e raised to power 0.15 into 5 is equals to 2 lakh rupees. Right? I hope everyone understands this much. Simran, Ariman, समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है. PV into PV is the amount which I want to calculate कि आज कितने इन्वेस्ट करना है. E raised to 0.15 into 5 equals to 2 lakh rupees. So PV e raised to 0.75 equals to 2 lakh rupees. ठीक है. Now how do I solve for E? ठीक है. How do I solve for this amount? How do I solve for this value? ठीक है. Let's try to understand that. ठीक है. इसको सॉल्व कर सकते हो आप? So instead of multiplying, we will divide 2 lakh with 3. Exactly. Solve करो इसको please. What is the answer? 94,473.3. 94,470. Exactly. Simply 0.75, sorry, 75. Second ln 1 by x into 2 lakh rupees.
94,470. This is the amount that I need to invest today to get 2 lakh rupees after. So can you please repeat the procedure in the calculator once again? You yourself solve the question. But I did it on a normal calculator. I did not do it on the BA plus calculator. You didn't use this calculator. I used the normal one, this one. Which one? So there's the basic calculator that comes in every phone. No, please don't use it. No, Arman. Don't even solve a single question using any sort of calculator other than what we are using. The reason for the same is because you're not allowed any other calculator in the exam. Yeah, that's why I've asked. Yeah. So please don't, even while you are in the class, I'm okay with repeating the mechanism twice or thrice, but don't ever use any other calculator. Because the calculator also plays a very important role in the exam, especially in level 1. Okay. So if you're not comfortable with it at any point, even a bit of it, no matter how good you are with understanding the concepts, it's all of no use. Okay. Please don't do that. Chalo. Now you wanted to calculate the value of e raised to 0.75. So simply 0.75 second ln. So this is the value of e raised to power 0.75, which is this part. PV e raised to 0.75 equals to 2 lakh, right? So I solve for this part. This part shall go in the denominator. So I simply do 1 by x, which is the denominator, into then 2 lakh rupees. So 94,473 is your answer. Simple. Okay, sir. Excuse me, Okay, sir. sir. I've got it. सर मैंने 1/x नहीं किया था लेकिन फिर भी मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर सेम ही आ रहा है. हाँ, 1 by x का मतलब बेसिकली ये है कि भाई 1 by x का मतलब क्या है कि जो ये वाली वैल्यू है वो यहाँ पे जाकर डिनोमिनेटर में 1/e⁻0.75 हो रही है. बात तो ही है. मैं 1 by x कर दूं या 2 लाख से इसको डिवाइड कर दूं बाद में सेपरेटली, एक ही बात है. ठीक है. Whichever way you are guys are comfortable, the answer should be correct and the timing should be accurate. That is the only requirement. Okay. Yes. Chalo. Now in the same kind of questions, let's say let's say you are being given 1 lakh rupees. You have 1 lakh rupees which you plan to invest. Okay. And you have been told that it shall become 2 lakh rupees. Asked to calculate the time period in which this 1 lakh rupees shall become 2 lakh rupees if the compounding is happening at 12% continuously. Okay. So in that case, my question becomes 1 lakh e raised to power 0.12 t equals to 2 lakh. Right? This is the equation which I have. Okay. Now e raised to 0.12 t equals to 2, because this 1 lakh and 2 lakh it's cancelled. So 2 lakh divided by 1 lakh is 2. Now I have to solve for this t. Okay, I have to solve for this t. So how do I do that? I put a log sign ahead of both of these values. I put a log sign. When I put a log sign against e, it becomes, this shall come downwards. So 0.12 t equals to ln2, and then just solve for. 5.77. So log 2 is what? Ln, sorry.
2 ln. This is log 2. ठीक है. When we calculate e raised to power x, we calculate, let's say, 2 second ln. When I want to calculate log 2, I just simply put 2 and then log. Clear? सिमरन समझ में आ रहा है? नो सर, एक्सप्लेन कौन सा था? कौन सा पार्ट नहीं है बोल. सर ये लॉक वाला. हाँ देख, अब जैसे अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, तो ये इक्वेशन बनी e raised to power 0.12 t equals to 2. ये बना. यस सर. ठीक है. अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पे वी आर स्टक कि भाई हम ये वैल्यू टी कैसे कैलकुलेट करके, ये तो पावर में है, ये तो हवा में है, राइट, एक तरीके से. तो उसको हवा से नीचे उतारना पड़ेगा. वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए मैंने दोनों साइड लॉग लगाया. इसके लिए मैंने दोनों साइड लॉग फंक्शन लगाया. तो जैसे लॉग फंक्शन लगाया तो ई रेस्ट टू 0.2 था ना, तो ये कैसे हो गया देख समझ यहाँ पे. अगर मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर है. जैसे मैंने लॉग फंक्शन लगाया तो ये तो नीचे आ जाता है, जो जो भी पावर में होता है ना वो नीचे आ जाता है. तो 0.12 t इंटू लॉग ई इक्वल्स टू log 2. ये बन जाता है. जो पावर में था वो नीचे आ गया, इंटू लॉग ई इक्वल्स टू log 2. ठीक है. तो मैं कल ओके यहाँ सर. तक याद आया समझ में. ठीक है. अब ध्यान यस रखना एक सर. चीज, सिंस log ई इक्वल्स टू 1, जो ये होता है ना इसकी वैल्यू 1 होती है. तो इक्वेशन क्या बन गई, 0.12 t इक्वल्स टू log 2. ठीक है. 0.12 t इक्वल्स टू log 2. अब हमारे पास क्या आ गया, log 2 आ गया. अब इसकी यस वैल्यू सर. निकालनी पड़ेगी अपन को, है ना. इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, कैलकुलेटर में जाएंगे, सिंपली 2 और फिर log. बस ये log 2 की वैल्यू आ गई. तो पॉइंट 0.12 t इक्वल्स टू 0.693 कुछ आ रहा था शायद. हाँ 6931. अब t की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे, 0.6931 डिवाइड बाय 0.12 डिवाइड बाय 0.12, 5.77. 5.77. सो मोटा मोटा 6.25 साल में 1 लाख रुपीज शैल बिकम 2 लाख रुपीज इफ द कंपाउंडिंग इज हैपनिंग एट 12%. क्लियर है? यस सर. आया समझ में? If this is clear, then solve one question for me. ये क्वेश्चन सॉल्व करो एवरीवन.
सर 18.23। Sir, 18.23%. Simply what you have to do, 100 rupees is what you're investing, e raised to power point और e raised to power r, यहाँ पे हमें r नहीं पता, ठीक है, t is 1, so 100 into e raised to power r equals to 120, so e raised to power r becomes 1.2, ठीक है, सिमरन सॉल्व हो रहा है, Yes, sir. ठीक है, e raised to power equals to 1.2, now since ये पावर में है तो उसको नीचे लेके आना होगा, तो इसके आगे क्या लगाना है, इसके ln e raised to power r equals to ln 1.2, तो r, ये r नीचे आ जाएगा, r ln e equals to ln 1.2, this becomes 1, so r equals to ln 1.2, so 1.2 ln, so 0.1823 is the answer, 0.1823 is the, ठीक है. Now there is one concept left, which is of leveraged return. Okay, that is with respect to LOS E. इसमें फिर gross return, net return है, which I am leaving to you. मतलब वो ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं. मतलब once you read it also, उसमें I don't think I need to cover it separately in class. अच्छा, इसमें एक चीज है which is important. Let me ask you. हाँ, guys, come to page number 22, LOSE. कम टू LOSE, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो काफी बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है सबके दिमाग में, ठीक है. प्लीज सी द फर्स्ट पैरा, ठीक है, उसमें थर्ड लाइन देखो, commissions on trade and other costs that are necessary to generate the investment returns are deducted in both gross and net return measures. ये प्लीज अंडरलाइन कर लें, ठीक है, ये प्लीज अंडरलाइन कर लेना इस लाइन. Sir, page number. बेटा पेज नंबर है 22 है पीडीएफ में, LOSE है फर्स्ट चैप्टर का, चैप्टर 1 का LOSE, ठीक है, मार्क कर लो, फिर का मतलब The समझो. page number. Page बेटा number. 22 पे नहीं मिल रहा क्या, LOSE फर्स्ट चैप्टर, LOSE, E फॉर एलिफेंट वाला ही, LOS से सर्च करा करो, LOS 1A 1B 1C ऐसे करके आता है ना, ब्लू लाइन में जो लिखा हुआ होता है, और नहीं मिल रहा अभी भी तो फिर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसको देख लो, ठीक है. यहाँ पे थर्ड लाइन देखो, commissions on trade and other costs that are necessary to generate the investment returns are deducted in both gross and net returns. कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यार which of the following have commissions deducted from them, gross returns, net returns, pre-tax nominal returns, and the student often gets confused कि यार कमीशन तो नेट रिटर्न में से डिडक्ट होगा, ग्रॉस रिटर्न में तो एडेड होगा. हमें ये चीज समझ आता है, कंफ्यूज है. इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी कमीशन है, बाकी जितने भी खर्चे होते हैं ना, वो सारे जो भी हमें रिटर्न प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा वो सारे डिडक्ट हुए हुए होते हैं, और फिर ग्रॉस रिटर्न कैलकुलेट होता है. फिर ग्रॉस रिटर्न में से जो मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होते हैं वो डिडक्ट होते हैं टू कैलकुलेट द नेट रिटर्न, ठीक है. कि अगर मान लो कोई भी अगर ये चीज समझो, ग्रॉस रिटर्न का मतलब ये होता है, एक मान लो फंड मैनेजर है, वो बोलता है कि मैंने 15% रिटर्न प्रोड्यूस करा है, तो ये 15% रिटर्न उसने निकाला है ना, इसमें से मैंने सारे
जो भी कमीशन वगैरह वाले खर्चे हैं, कि हर ट्रेड ले तो उस पर कमीशन लगता है, राइट? सो कमीशन वगैरह लग रहा है, कोई भी ऐसा खर्चा लग रहा है, या अकाउंट ओपनिंग फीस है, या कोई भी खर्चे हैं, वो सब निकालने के बाद मैं बोलता हूँ कि 15% रिटर्न आया। ये होता है ग्रॉस रिटर्न। फिर ग्रॉस रिटर्न में से जो फंड मैनेजर होता है वो अपनी खुद की फीस हटाता है टू कैलकुलेट द नेट रिटर्न विच इन्वेस्टर हैज। ठीक है? ये बहुत छोटी सी लाइन थी बट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है इस पे, इसलिए आई वांटेड टू हाईलाइट दिस। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, ओके। नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज्ड रिटर्न। ठीक है, लेवरेज रिटर्न का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझो। ठीक है, लेवरेज का मतलब होता है दैट यू आर taking some sort of investment or doing some sort of investment using some sort of benefit, some sort of benefit। कैसे? लेट्स से अगर मेरे पास 100 रुपए है, तो इन अ नॉर्मल सिचुएशन मैं केवल 100 रुपए का ही ट्रेड ले सकता हूँ मार्केट में, राइट? बट यहीं पे आता है लेवरेज ट्रेडिंग। लेवरेज ट्रेडिंग क्या बोलता है? लेवरेज ट्रेडिंग वो क्या बोलता है कि सर आप एक काम करो, आपका 100 रुपए है ना, तो 100 रुपए तो आप जमा करो, और मैं आपको फैसिलिटी दे रहा हूँ कि आप 100 रुपए जमा करा के आप 1000 रुपए का ट्रेड लो। 10 टाइम्स ट्रेड लो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उससे 10 टाइम्स ट्रेड लो। और जो आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, वो 100 रुपये भी नहीं होगा, वो 1000 रुपये पे होगा। यार ये तो बढ़िया डील हो गई, ये तो बढ़िया डील हो गई। मैं थोड़ा पैसा देके बड़े अमाउंट ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे को प्रॉफिट लॉस भी इस बड़े अमाउंट पे हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज लेवरेज ट्रेडिंग। आज मान लो मैंने 100 रुपये लगाए, 100 रुपये जमा कराए और उस पे 1000 रुपये का ट्रेड लिया, और 1000 रुपये पे मेरे को 10% का प्रॉफिट हुआ। तो 1000 रुपये का 10% कितना होता है? 1000 रुपये का 10% कितना होता है? 100 रुपीज। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपीज का। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ मुझे? 100 रुपीज का। और जो मैंने लोन लिया है 900 रुपए का, एक तरीके से ये जो 900 रुपए है मेरे को एक तरह से लोन मिले, इस लोन पे मुझे मान लो 1% चुकाना है। तो मैं रिटर्न कितना बना एक तरीके से? मैंने कमाया 100 रुपए, माइनस 9 रुपए मुझे इस लोन पे देने पड़े, डिवाइड बाय 100। तो मैंने 91% रिटर्न कमाया एक तरीके से। दिस इज कॉल्ड एज लेवरेज रिटर्न। इसको वापस समझ लो, जिनको थोड़ा कम समझ में आया, कि लेट से मेरा एक ब्रोकर है, उसने मुझे एक फैसिलिटी दे रखी है। उसने क्या बोला कि आप जो भी अमाउंट जमा कराओगे उसका 10 टाइम्स मैं आपको अलाउ कर दूंगा ट्रेड करने को। एंड जो पैसा मैं आप, भाई 100 रुपये तो मैं मान लो 10 रुपये मैंने जमा कराए, तो मैं उससे 100 रुपये का ट्रेड ले सकता हूँ। तो जो 90 रुपये बचे, जो 90 रुपये का लोन मुझे मिला, उसमें मुझे इंटरेस्ट चुकाना है 1%। उसमें मुझे इंटरेस्ट चुकाना है मान लो 1%। ठीक है, तो अब मुझे कैलकुलेट करना है कि मैंने एज अ इन्वेस्टर रिटर्न कितना कमाया, अपने इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न कमाया। तो इसके लिए लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 100 रुपए ब्रोकर को दे रहा हूँ अपनी तरफ से, तो मुझे 1000 रुपए का ट्रेड लेने देना है। ठीक है, अच्छा पहले ये चीज समझ में आई कि 100 रुपए देके 1000 रुपए का ट्रेड कैसे ले सकते हैं? पहले ये चीज क्लियर है क्या? विवेक, सिमरन, मयंक, आयुष, आर्यमन? यस। सिमरन, ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट लेवरेज का सबसे पहले? Yes. ठीक। तो 100 रुपए जमा करा के मैंने 1000 रुपए का ट्रेड लिया है मार्केट। ठीक है, और जो 100 रुपए जमा करा के मैंने 1000 रुपए का ट्रेड लिया है, तो मैंने अमाउंट बोरो कितना करा सिमरन? मुझे ब्रोकर ने अमाउंट लोन कितना दिया है? ब्रोकर से मुझे लोन कितने अमाउंट का मिला? 900. एग्जैक्टली 900 का। ठीक है, अब मान लो मेरे को 10% का प्रॉफिट हुआ, जो मेरे इस अमाउंट पे 10% का प्रॉफिट हुआ। तो 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपए। तो मेरे को प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, और इस लोन पे मुझे कितना देना है? 1% इंटरेस्ट देना है।
तो मैंने 1% इंटरेस्ट दिया, मतलब 900 का 1% कितना हुआ? 9 रुपए। डिवाइड बाय 100। 100 क्या था? मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट था। तो मैंने 91 रुपीज कमाए एक तरीके से 100 रुपए पे। यानी मेरा रिटर्न कितना हुआ? 91%। इसे हम बोलते हैं लेवरेज्ड रिटर्न। दिस कॉल्ड एज लेवरेज्ड रिटर्न। कि 100 रुपए लगा के मैंने 91 रुपीज कमाए, जिसे हम बोलते हैं लेवरेज रिटर्न। लेवरेज रिटर्न क्या करता है? आपके रिटर्न्स एम्पलीफाई कर देता है। आपके रिटर्न्स एम्पलीफाई कर देता है, बिकॉज आपको खुद का पैसा कम लगाना पड़ता है, आपको बहुत सारा पैसा एज अ लोन मिल जाता है। क्लियर? नाउ कम टू मॉडल क्विज 1.3 एवरीवन। 1.3 पे आओ, एंड 3 क्वेश्चंस आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज सॉल्व देम। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चंस, प्लीज सॉल्व देम। Sir, in question number 2, if the stock's initial price is $20 and the price increases to $23, its continuously compounded rate of return is closest to. They have not given us any year or number of years. Should I take it as one? Take it as 1 year. Take it as 1 year. Thank you. Sir, I cannot get the first question. I have answered the second and third question in the chat box, so the first question is a little confusing for me. That's good. Yes, sir. First line. Does all solve, and then we'll start. Done, everyone? Simran, done? Yes, sir. Then. Okay, first question हो गया।
सिंपल क्वेश्चन है। हमें बोला है that if the investment loses 3% of its value over 120 days, let's say there's a particular investment which gives a return of minus 3% over 120 days. Now we are asked to calculate the annualized return. Okay, if 3% is for 120 days, can we not easily calculate for 365 days? Simply in that case, if you're getting minus 3% for 120 days, okay, which means that let's say 1 minus 0.03 is what you're getting after 120 days, okay. So for 365 days, it shall become 365 divided by 120. Not अरे getting it? 1 का क्या लॉजिक है? अरे यार, 1 रुपए से स्टार्ट करें, 1 रुपए से 3% कम होगा ना। 1 प्लस आर प्रिंसिपल में। करते हैं, 1 प्लस आर करते हैं। यस। हेलो, हाँ 1 प्लस आर करते हैं। तो यस सर, 1 आ प्लस गया सर। आर की जगह मैंने क्या करा, नेगेटिव हो गया 0.03। जो पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव है, लूज करें ना जो वैल्यू, ठीक है। यस सर। बस, या फिर इसको मेरे ख्याल में एक चीज तरीके से और ट्राई कर सकते हो। तो एड्स बहुत आता है इसमें। ठीक है। अनदर वे दैट यू आर कंफर्टेबल ट्राइंग इज, लेट्स से टेक पीवी एस 1 और -1, पीवी -1, ठीक है, which is the money which you're investing today. Your return is 3% for 120 days, ठीक है, 3% for 120 days. I'm just giving it a try. 3% for 120 days, right? So in that case, for 365 days, how you shall calculate? -3% है ना? So 3% for 120 days. So for 365 days becomes 3% into 365 by 120, ठीक है। एक बार ऐसे करके देखो, तो दिस शैल बी 3 into 365 divided by 120, so 9.250 नेगेटिव, बट आई थिंक उससे वो नहीं बैठेगा। लेट मी थिंक, इसको मैं आई वांट टू डू इट बाय कैलकुलेटर सो दैट यू guys are comfortable. Hmm. Wait a second. 3% negative. I will enter 1. We enter 365 divided by 120 and enter 0. We enter CPT. Yes, ऐसे भी कर सकते हो. Okay, guys, listen. There's also one more method which I thought which shall make things easier for you. We simply interest rate कितना है, -3% for 120 days. So can we say that your compounding is happening at -3% for 120 days? ठीक है, तो your I by Y is -3%, right? And since you are asked to calculate annual return, so you want N for 365 days. You want N for 365 days simply, right? This can be written as 365 divided by 120. फॉलो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? यस सर। नहीं, ये सर मुझे सबसे चाहिए। Yes, sir. सिंपली समझो इस चीज को कि अगर 3% कंपाउंडिंग हो रही है 120 दिन के लिए, और मुझे 1 साल के इंटरेस्ट रेट चाहिए, 1 साल में होते हैं 365 दिन, ठीक है। तो अगर 3% कंपाउंडिंग हो रही है 120 दिन के लिए, तो 365 दिन में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी?
365 डिवाइड बाय 120 इतनी बारी कंपाउंडिंग होगी, है ना। तो मैं यहाँ पे सेम वो लॉजिक लगा सकता हूँ कि भाई 3 नेगेटिव, इसमें आई बाय वाई, ठीक है, और 3% है 120 दिन के लिए, तो 365 दिन में कितनी बार कंपाउंड होगी, 365 डिवाइड बाय 120, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग शैल हैपन इन 1 ईयर। 0 पीएमटी, 1 नेगेटिव पीवी सीपीटी एफ, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मनी आफ्टर 1 ईयर। तो एक साल बाद जो मेरे पास वैल्यू आ रही होगी, वो आ रही होगी कितनी, 0.9155, तो 0.9115, यानी मैंने अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करा तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0.9115। यानी मेरा जो इंटरेस्ट रेट जो रिटर्न है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1+R into 1 = 0.9115। तो उस केस में आर क्या हो गया, 1 माइनस 0.9115, विच इज +1.0885। तो योर आंसर शैल बी आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन। सिमरन लॉजिक समझ में आएगा, देखो मयंक, मयंक शांत प्रिंसिपल, बैठा है। हाँ वो बोलो भाई। पहले पूरा प्रिंसिपल था ना टोटल, इसलिए -1 की। कौन सा प्रिंसिपल? मतलब जो 9 करके एक फिगर आई थी, वो पूरा टोटल अमाउंट। हाँ वो फाइनल अमाउंट है ना, कि एक साल बाद मुझे कितना मिल रहा है। मेरे को एनुअलाइज रिटर्न निकालना है। एनुअलाइज रिटर्न का मतलब क्या होता है, कि वो रिटर्न जो अगर 120 दिन का ये रिटर्न है, तो एनुअल रिटर्न उसके बराबर होना चाहिए बेसिकली। कि मैं एनुअली इन्वेस्ट करूंगा या 120 दिन के साथ से करूं, दोनों बराबर होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या यस होगा कि अगर मैं 1 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ आर रेट पे, तो वो कितना बन रहा है, 0.9115 बन रहा है। तो उससे आर के लिए मैंने सॉल्व कर लिया। क्लियर है यस सिमरन? आर्य में समझ में आ रहा है दोनों को? यस सर। Yes, sir. So, आई थिंक वी शैल पॉज द क्लास फॉर नाउ एट इट्स 11:02। तो अभी क्या करते हैं, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड कनेक्ट एट 11:20। आप भी कुछ खा पी लो, आई शैल हैव समथिंग ऑल्सो, एंड देन वी स्टार्ट एट 11:20 अगेन, ठीक है। यू हैव गुड 10-15 minutes, so take a break yourself, I shall have some food also, and फिर हम कनेक्ट करते हैं at 11:15, ठीक है।